एवरीवन पास गलणी तो पास गलणी ओके ठीक अछि एतर स्टार्ट करबा ओस्कार भाऊ प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम ये ओस्कार भाऊ तमे किए प्रणाम प्रणाम शुभलक्ष्मी सेनापति कौन शुभलक्ष्मी बाहिनीपति प्रणाम प्रणाम स्टार्ट करबा आज क्लास आज मस्त मस्त क्वेश्चन आसी गोटे क्वेश्चन ने तमे पाखापाखि 5टा 6टा डाटा आज गोटे गोटे क्वेश्चन ने स्वाधीना नहीं गुड इवनिंग स्वाधीना अच्छा लुक्का हाँ हाँ इरे बापू तुम कौन दिन को दिन ना जय हिंद हाई जंप लवर आयुष अच्छा तुम हाई जंप केबे आसो हाई जंप खेलिबा होना नहीं गुड इवनिंग दुर्गा ओके ठीक अच्छे स्टार्ट करबा बहुत है गुड इवनिंग प्रणाम हाँ समस्त को प्रणाम समस्त को गुड इवनिंग समस्त को जय हिंद ठीक अच्छे काली आसीगला आज गोटे क्वेश्चन मधुस्मिता गुड आज गोटे गोटे क्वेश्चन ने तुम 5टा 6टा डाटा क्लियर हो राइट प्रिपेयर करू हाँ ठीक अच्छे जीवा आज बढ़िया तुम मान को कही ना आई केयर पब्लिकेशन को जीवा पब्लिकेशन.com को जीव ओडिशा पुलिस पॉय कनेस्टेबल कि तुमको फ्री ऑफ द कॉस्ट तुमको आसी जो स्टडी गाइड आसी जो रिक्रूटमेंट एग्जाम आसी जो हाँ नहीं बहुत किसी जिनस आसी जो फ्लिपकार्ट आमाजन अच्छा ये बही आई केयर बही यहाँ अच्छा ओके लोकल बुक स्टोर मिल अच्छा आउ तुम मान संजीवनी बैच प्योरली कॉन्सेप्ट बैच प्योरली कॉन्सेप्ट रु तुम मान ज्योग्राफी नेबी राइट बहुत जल्दी देखिबो ज्योग्राफी रे प्योरली कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी आई थिंक हाँ ज्योग्राफी बोधे मु नेबी ज्योग्राफी रो कॉन्सेप्चुअलाइज ईच एंड एवरी जिंस तुमको से जगह मिलिबो राइट फ्री ऑफ द कॉस्ट एटा हला फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब रे मिलिबो आई केयर एप्लीकेशन ने भी मिलिबो राइट ओके अच्छा तार जदि टेस्ट सीरीज नबा पे चाहिबो जोटा आगुरु 149 टका थिला एबे 99 रुपीस हे जेछि टेस्ट सीरीज जदि जॉइन करिया पे चाहिबो किंतु तार फ्री बैच ता तुमको यूट्यूब और आई केयर प्लेटफॉर्म रे मिलि छै ओके फर्स्ट क्वेश्चन गोटे गोटे क्वेश्चन ने कही चारि चारिटा क्वेश्चन सॉल्यूशन हम ओके स्टार्ट करो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्टली मैच होना नहीं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि सीओ से भी कन्वर्ट हो जाए एनएस से फिजिकल पॉलिसी दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जे कि क्रेडिट पॉलिसी दिए नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER जे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे दिए प्लानिंग कमीशन जे कि कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल कौन होबा आंसर ओ आंसर ओके कौन सब कहउछो आइजम कहउछि सी दुर्गा कहउछि बी लुक्का कहउछि बी ओके चलो पीएसओ होना नहीं पीएसओ जोटा रहिला तमरो ये हला इकोनॉमिक डाटा बा डेमोग्राफिक डाटा ऑन दी इकोनॉमिक डाटा बा डेमोग्राफिक डाटा दी ऑन दी डेमोग्राफिक डाटा दी यानी कंट्री जति को डेमोग्राफिक डाटा बा इकोनॉमिक डाटा रहिला ये दे के सीएसओ दिए होना नहीं आरबीआई कौन दिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स फिजिकल पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई दिए होना नहीं तो आरबीआई कौन हैला क्रेडिट पॉलिसी दी ओके तापर रहिला कौन एनसीएईआर कौन दिए इंडियन इकोनॉमिक सर्वे दिए ना दिए नहीं एनसीआर कौन दिए एनसीआर दिए माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेस डाटा होना नहीं
माइक्रो इकोनॉमिक रो बिजनेस डाटा दिए किए दिए माइक्रो इकोनॉमिक रो होना नहीं माइक्रो इकोनॉमिक रो बिजनेस डाटा दिए होना नहीं एनसीईआर कहा डाटा दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स रो डाटा ओके नेक्स्ट तापर आउ कोन रहला प्लानिंग कमिशन होना नहीं प्लानिंग कमिशन कहार दिए पॉवर्टी रो डाटा दिए कहार डाटा दिए पॉवर्टी रो डाटा दिए कहार डाटा दिए पॉवर्टी इंडिया रे केते पॉवर्टी अछि पॉवर्टी इंडेक्स रो डाटा दिए हला सिंगल क्वेश्चन तो आंसर कोन हे जिवो बी रिजर्व बैंक कहार डाटा दिए क्रेडिट पॉलिसी होना नहीं फिस्कल पॉलिसी होना नहीं मॉनेटरी पॉलिसी ये सब जिंस दिए होना नहीं ठीक अछि अंजलि प्रणाम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पाइलो आरो आंसर हे गेला बी which one of the following represents at least in part investment on human capital कोटा at least in part of investment रहिबो ए formal education on job training better health care and nutrition all of the above कोन कहूचे सुनो ह्यूमन कोन ता पछरे को ह्यूमन कैपिटल से खर्च करी हना नहीं कोन हबा आंसर को नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डी कालिया कहूची डी ओके नेक्स्ट कहि चलो कोन कहूचो कालिया कहूचो डी लुका कहूची डी दुर्गा कहूची डी ओके कोन हैला मनीष ता पछरे एजुकेशन पाई भी खर्च करे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पाई भी खर्च करे बेटर हेल्थ और बेटर न्यूट्रिशन पाई की भी खर्च करे सो आंसर कोन हे जिवो डी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर कोन हे जिवो डी ऑल ऑफ दिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज मीन्ड बाय ऑटर्की इन द इंटरनेशनल ट्रेड मोनोपोली इन इंटरनेशनल ट्रेड imposition of restriction in the international trade removal of all restriction from international trade the idea of self sufficiency and no international trade by a country ऑटर्की आ माने कोन ऑटर्की माने हला टेक्निकल टर्म में जदी हमें कहबा सेल्फ रिलायंस होना नहीं गोटे समय रे इंडिया थिला आगुरु जो माने सब भारत रो लोक माने बाहर जाउ करिया गोटे समय रे इंडिया कोन थिला कौन सेल्फ रिलायंस नहीं तो आंसर है द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी नो इंटरनेशनल ट्रेड बाय द कंट्री आंसर है कौन डी एक्सीलेंट समस्त नॉर्थ कोरिया गुड एकना से कौन करिसंदी देख नॉर्थ कोरिया ऑटर्की रे जीवनी नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी रे जीवो होना नहीं क्लोज्ड इकोनॉमी रे जीवो काहे कि ना सी निजे ही ट्रेड करूनी ता बोली नुहे जे तार कंट्री रे ऑटो माने सेल्फ सफिशिएंट से कंट्री रे अछि से जिंस कोनोसी ग्यारंटी नाही होना नहीं तेणु से कोन जीवो क्लोज्ड इकोनॉमी रे जीवो ऑटो किरे जीवो नाही राइट लुका बुझिलो ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन which country was the first to adopt gold standard in the modern sense मस्त मस्त क्वेश्चन आज आनी बाछी बाछी आज क्वेश्चन आनी तुम मन कौन हम आंसर को इटाली फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन पोर्तुगाल गोल्ड स्टैंडर्ड किए फास्ट अडॉप्ट कला मस्त मस्त क्वेश्चन आनी को कालिया कहूची सी दुर्गा कहूची सी प्रिया सिंह कहते डी अच्छा चारि कहूची सी एग्जैक्टली गोल्ड स्टैंडर्ड को फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन ही अडॉप्ट करितला देन अन्य देश आंसर कोन हे जिवो सी होना नहीं आंसर कोन हे जिवो सी स्वाधीना कहूची सी दीपिका मुन्नी कहूची दीपक मुन्नी कहूची सी ओके प्रिया सिंह कहूची सी ओके गुड एक्सीलेंट तो आंसर कोन हे जिवो ग्रेट ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एवं द फॉलोइंग सेक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द सेविंग्स कहा को कंट्रीब्यूट करू रे बाबा सेविंग्स को कंट्रीब्यूट करछ इन इंडिया के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोर्ट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर
सेविंग्स रे किए कंट्रीब्यूट करे क्वेश्चन बुझ बुझ कोथरे से कोथरे कंट्रीब्यूट मोस्ट कंट्रीब्यूट इन सेविंग्स ए जिंस माइंड रे पुरा किए हो आंसर कोन हो आंसर ओके ये कोन कहउछ टे देखिबा लुका कहउची सी आलिया कहउची ए स्वाभिना नाय कहउची ए लुका कहउची हाउस प्रिया सिंह कहउची ए ओके कथा कोन कहउची बुझ से कोन करूची सेविंग्स रो क्वेश्चन पछला बैंक पाखरे बा फाइनेंशियल सेक्टर पाखरे जेते जेते पैसा हबो से कोन करिवो ताकू सेते इन्वेस्ट करिवो आ ताठू अधिका एक्स्ट्रा मनी काढिबा पई करिवो सेविंग्स करिवोनी कोन करिवो इन्वेस्ट करिवो कोन करिवो इन्वेस्ट करिवो सेमती एक्सपोर्ट सेक्टर माने अधिका पैसा ले अधिका प्रोडक्शन करिवो बाहर को अधिका बिकिवो तने कोन कोथरे सी भी इन्वेस्ट करिवो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सी भी इन्वेस्ट करिवो होना नहीं किंतु हाउस होल्ड सेक्टर रे कामे कोन पाइबा मैक्सिमम लोक कोन करंती अधिका पैसा गेले कोन करबा होना नहीं आमे सेविंग्स करबा होना नहीं आगु काले दरकार पड़ी जीवो कोन पड़िबो ए सब जिंस जेउ तो आसीबो ताको कोथरे देखिबा हाउस होल्ड सेक्टर आमे पाइबा कोन मैक्सिमम अमाउंट रो सेविंग्स सो आंसर कोन हे जीवो सी क्लियर समस्त बुझिलो नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि सामरिक सामाजिक सुरक्षा योजना कृषि सामरिक सामाजिक सुरक्षा योजना इज ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ये जो योजना हेतला कहा पे प्रोवाइड हेतला इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ए लाइफ एट ए विलेज लेवल एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स सब्सिडाइज हाउसिंग फैसिलिटी कौन होबा आंसर लुका गोटे बढ़िया कथा कहला घर लोक मैंने जमती हाँ ना नहीं कोठी चाउल डब्बा भितर गडरेज को थाक तले हाँ ना नहीं बुझीपार ना घुम भितर घुम माने जानछथि बड़ बड़ पात्र जोटा जी घुम रखती हाँ ना नहीं ताको कह जाए ठीक ठीक लुका हाँ मु एबे पढ़ली तो कमेंट ओके तो कौन है ये योजना कौन पे आसीतला हाँ ना नहीं ये योजना कौन पे आसीतला देखो ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा कहा द्वारा ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा आसला कहा द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा आसला होना नहीं केबे आसला जानिसो पिले जुलाई 2001 जुलाई 2001 रे आसला जे कि पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट तांको पई कि ही स्कीम कोन आसला प्रोवाइडिंग करतला पेंशन और इंश्योरेंस केवल पेंशन इंश्योरेंस नुहे एग्रीकल्चर सेक्टर लोकन पई का पई कि एग्रीकल्चर सेक्टर लोकन पई कि भी प्रोवाइड करूतला राइट बुझी पल्लो आंसर हे जबो सी ए नुहे आंसर हे जबो सी पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स होना नहीं नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच सेबी सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी बोर्ड आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी आईडीबीआई वर्ल्ड बैंक एसबीआई कमर्शियल बैंक कौन होबा आंसर को कौन होबा आंसर को वाजपेयी गवर्नमेंट बेले आज्ञा हाँ लुका आसतिला सेटा लुका कहूँ आड़ खाली आसुचे अरे बाबा सेटा मो हाथ में नाई ताको केमते कंट्रोल करिवे गुड 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 एवरीवन गुड गुड होना नहीं आईडीबीआई कौन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एटा वर्ल्ड बैंक के नुहे कथा कौन कहूँ बुझ आज से भी सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी बॉडी गोटे होना नहीं सिक्योरिटी मार्केट रो रेगुलेटरी बॉडी बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी की आरबीआई कमर्शियल बैंक के ये गोटे कौन है कमर्शियल बैंक रे जीवो ता सहित कोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जे कि वर्ल्ड बैंक सहित कोनोसी सम कोन ता सहित कोनोसी कोन ताको कोनते से टर्म सिमिलरिटी ता धरे नाही तो आंसर कोन हे जीवो सी एइना क्वेश्चन पचाची नॉट करेक्ट राइट क्वेश्चन पचाची नॉट करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा ग्रीन इंडेक्स has been developed by ग्रीन इंडेक्स has been developed by ग्रीन इंडेक्स की आनथिले
यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ दिस एबव। ग्रीन इंडेक्स सबुज केंद्र किए ग्रीन इंडेक्स किए यूएनईपी ना आईएमएफ ना वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी। कौन हम आंसर? आंसर हम कौन? वर्ल्ड बैंक। कौन हम आंसर? वर्ल्ड बैंक। ग्रीन इंडेक्स के वर्ल्ड बैंक आनी किए आनी वर्ल्ड बैंक आनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। गरीबी हटाओ, अच्छा फॉलोइंग, अच्छा फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज इन दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गरीबी हटाओ, बैंकिंग बैंक नेशनलाइजेशन, बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। हाँ ना नहीं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किए प्रथम आसीथिला, किए ता बाद आसीथिला को देखो। गरीबी हटाओ आसीथिला फिफ्थ 5 ईयर प्लान ने। हाँ ना नहीं? केबे आसीथिला? फिफ्थ 5 ईयर प्लान ने, जे कि 1974 रु 1979 आसीथिला। हाँ ना नहीं? बैंक नेशनल आसीथिला फोर्थ 5 ईयर प्लान ने। हाँ ना नहीं? केबे? फोर्थ 5 ईयर प्लान ने 1969 रु केबे 1974। हाँ ना नहीं? हाँ ना नहीं? ग्रीन रिवोल्यूशन केबे आसीथिला? थर्ड 5 ईयर प्लान ने। केबे आसीथिला? थर्ड 5 ईयर प्लान ने। हाँ ना नहीं? थर्ड 5 ईयर प्लान ने 1961 रु 1966 आ भितर आसीथिला। जदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे जदि आसीबो ताले कोन आसीबो? 3 2 1। होना नहीं? आंसर हे जिवो बी। क्लियर? गुड 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट प्रोपागेटेड प्योर मॉनिटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल? ये वो इकोनॉमिस्ट थिले जे कि प्योर मॉनिटरी थ्योरी ट्रेड साइकिल आनी थिले। ट्रे, हायेक, केन्स, हिक्स। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के एम एस स्वामीनाथन। ओके किए आनथिले? आनिथिले ट्रे। अना नहीं? किए आनथिले? ट्रे। आंसर हबो ए। सी नुहे कालिया, आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल रिन्यूएबल फंड सेटअप। कहार? नेशनल रिन्यूएबल फंड सेटअप इन फेब्रुअरी 1992। रे बापा एते पुराना क्वेश्चन। टू गिव ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग ऑफ द 1992 रे कोन कराइतला? अच्छा हो बेले बेले एमती क्वेश्चन आसो चारे रे। ओके, टू गिव ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर द वर्कर्स अफेक्टेड बाय द रिट्रेंचमेंट रीडेवलप ऑफ द वर्कर्स। काहे के क्वेश्चन आसला मु भी कहबी। एते पुराना क्वेश्चन 1992 रो क्वेश्चन काहे केबे पकेला? कोन हो आंसर को? करेंट से किसी लिंकेज अच्छी क्वेश्चन न? ओके देखो कौन है जिनस कौन बुझ जिते बेले 1991 बेले देश फाइनेंशियल क्राइसिस को जाउतला होना नहीं सेते बेले 91 ने गोटे मॉडल आसला मनमोहन सिंह राव मनमोहन सिंह मॉडल ताको कहतला की मॉडल लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी मॉडल को मॉडल कहतलम एलपीजी मॉडल कहतल राइट कौन कहतलम एलपीजी मॉडल होना नहीं से एलपीजी मॉडल बेले कौन आसीथिला नेशनल रिन्यूएबल फंड सेटअप हेतला कौन हेतला नेशनल रिन्यूएबल फंड सेटअप होना नहीं टू गिव ट्रेनिंग काउंसलिंग फॉर द वर्कर्स अफेक्टेड बाय रिट्रेंचमेंट कहीं की फाइनेंशियल क्राइसिस जो होबा को जाउतला होना नहीं से रिट्रेंचमेंट जो कौन थिले वर्कर्स थिले तांको कौन कहतला ट्रेनिंग दियाबो काउंसलिंग दियाबो आउ तांकर रीडेवलपमेंट ऑफ द वर्कर मानकर डेवलप हबो तो आंसर हे बोथ ए 1
बुझी पारलो काहे केते पुराना क्वेश्चन आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैला कोन बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन unemployment and poverty estimates in India are based on NSO household consumption expenditure CSO household consumption expenditure survey planning commission's household consumption expenditure survey NSO family income कोन family income survey कोन होबा आंसर को मस्त मस्त क्वेश्चन आज आछे बाहर कालिया कहूँ सी ओके आउ किए कौन कौच देखा देख पॉवर्टी इंडेक्स हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे रू ही आसे कथा है ये हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे मन नहीं किए दिए दिए है एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आंसर हो ए राइट आंसर हो ए नेक्स्ट क्वेश्चन the main reason for low growth rate in India in spite of high rate of savings and capital formation होना नहीं the main reason for low growth rate in India in spite of high rate of savings and capital formation कौन पाई की हुए high birth rate low level of foreign aid low capital output ratio high capital for output ratio कौन होगा आंसर कालिया कहूँ ए बाबूरे सीएसओ और एनएसएसओ मिसिकी एनएसओ हो जाइए आज्ञा बुझुचे बारंबार ए क्वेश्चन आम रिपीट कर नो प्रॉब्लम लुका कहूँ सी लो कैपिटल फॉर आउटपुट रेशियो हाई कैपिटल फॉर आउटपुट रेशियो कौन आंसर को कालिया कहूँ ए हाई बर्थ रेट देख आंसर हम हाई कैपिटल फॉर आउटपुट रेशियो कथा कौन कहूँ बुझी पारुछ जी आउटपुट होची तार कैपिटल हाई होना नहीं से लो ग्रोथ होची माने गोटे कथा तुम बुझा चेष्टा कर चाइना कथा चिंता कर चाइना कथा चिंता कर इंडिया रे गोटे चेयर मैन्युफैक्चर हबा पई मानि नियो जस्ट फॉर एग्जांपल तुमको कहूँ इंडिया रे गोटे चेयर मैन्युफैक्चर हबा पई मने कर 50 रुपीज लागुच होना नहीं चाइना सेम चेयर सेम मेटल को 5 टंका रे प्रोड्यूस कर दउछ कथा कोन कहूँ बुझ होना नहीं चाइना 5 टंका प्रोड्यूस कर वो ग्रोथ हम ना हेनी जदि ए जगह प्रोडक्शन खर्चटा टिके जदि कम जदि आसी जीवो होना नहीं ताले कोन हो ग्रोथ रेटटा कोन हो हेवी हो हाँ लुका ये टेक्निकल क्वेश्चन थिला बट जिनस क्लियर हैला ना हैलानी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following is correct regarding which of the following is correct regarding stabilization of structural adjustment of two components of the new economic policy adopted in India nahi adopted in India question is stabilization is a gradual multi-step process while structural adjustment is a quick adoption process structural adjustment is a gradual multi-step process while stabilization is quick adoption process. Stabilization and structural adjustment are very similar complementary policies. It is difficult to separate one from the other. Stabilization mainly deals with the setup of policy which are to be implemented by the central government while structural adjustment to be set up mention the structural adjustment है ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस होना नहीं ताको कौन कह जाए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट व्हाइल स्टेबलाइजेशन इज ए क्विक एडॉप्शन प्रोसेस कौन कहली कथा बुझी पारिलो तो आंसर कौन हेजिवो क्विक एडॉप्शन प्रोसेस तो आंसर हेजिवो कौन ओके डी नुहे रे पिले आंसर हेजिवो बी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउला ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पेमेंट्स कौन हबा आंसर को हाउला ट्रांजैक्शन received in rupees against overseas currencies and vice versa without going through the official channels
received for the sales transfer of shares without going through the established stock exchange, received as commission for the service rendered to overseas investors, buyers, sellers in assisting them to get over the red tape and as in getting proper preferential treatment made to political parties or individuals for meeting election expenses. कौन होगा आंसर को? आंसर अब सुनो. Howla transaction received in rupees against overseas currencies. होना नहीं overseas currencies रे कौन and vice versa currency को receive करिवो ता सहित send भी करिवो without going through the official channels. को कह जाए हावला transactions. होना नहीं ताको कौन कह जाए हावला transactions. ओके ठीक अछि. दुर्गा कहूँ मु जाऊँ संध्या दे कि आसबि मु पछरे अच्छी. सार घरे किए संध्या देव पाठ पढ़ ठाकुर छाँ तुम पाक आशीर्वाद करेंगे. नेक्स्ट ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम. ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ he is able to fulfill his need with a given level of income. होना नहीं he is able to live in full comforts with a given level of income. He can fulfill his needs without consumption of certain items. He is able to locate new sources of income, economic and social development for एटा कोन social development. अनिल पचाचे सर आप रे ओडिशा पुलिस क्लास केबे हो? ऑलरेडी तो स्टार्ट हे गलानी ना संजीवनी बैच तमरो. यूट्यूब रे लाइव आसुची ता सहित आप रे भी आसुची ना. लुका कहूँ कौन शुण क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह जाए. देख he is able to fulfill his need with given level of income. कौन क्वेश्चन कहली बुझी पारिलो जेतिकी तार इनकम अछि तार सबो नीड को से कौन करूची फुलफिल करूची ताकू कह जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. मधुस्मिता कुआडे आसुची पुणी पळौची ना तमरे सियाडे बात्या बात्या हेलानी कि रे इले आंसर इजबो ए. गुड गुड एवरीवन. The supply side of economics lays greater emphasis. The supply side of the economics lays greater emphasis on the point of view. On the point of view. View of कहा point रे देखा जाए producer, global economy, consumer, middleman. आपरे शो करूनी ठीक अच्छी देखी देबा कौन अच्छी प्रॉब्लम माने नहीं सप्लाई कहा को देखी करा जाए कहा को देखी सप्लाई करा जाए. ऑब्वियसली कथा सप्लाई कहा को देखी करा जाए कंज्यूमर को देखी ही करा जाए. तो आंसर कौन हे जिवो आंसर कौन हे जिवो सॉरी 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 के मिस्टेक बाय मिस्टेक. देखो सप्लाई प्रोड्यूसर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फासिस ऑन द पॉइंट व्यू ऑफ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर पाखरे केते पैसा अछि माने नहीं सेटा ही सप्लाई साइड रे इकोनॉमिक्स को कोन करिवो देखिबो. ठीक अछि आंसर हे जिवो ए. ओके आंसर हे जिवो ए प्रोड्यूसर. नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हैला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मतलब देखाउ नेठी लाइट एते आसुची ओ सेतमे बाध्य कि बोलुची. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट of industrial development in India. An extent is constrained by lack of adequate entrepreneurship and leadership, lack of saving to invest, lack of technology skills and infrastructure, limited purchasing power among the large.
कौन से पचार consider the following statement industrial development in India to an extent is constrained by नहीं आप ये constant lack of adequate entrepreneurship and leadership in business ना आप की हुए नहीं lack of savings to invest नहीं देखो इन्वेस्ट करबा पई कि कोन होबो देखो सेविंग्स नियाती दरकार जोटा कि प्रायतः न थाए lack माने अच्छा ठीक हो lack of the technology skills and infrastructure होना नहीं जोटे कि इंडिया रे वर्तमान सुधा भी प्रॉपर वे इंफ्रास्ट्रक्चर नाही लिमिटेड परचेजिंग पावर एमंग द लार्जर मासेस मैक्सिमम लोक कोन करंती परचेजिंग पावर तांको पाखरे नाही अच्छा परचेजिंग पावर कैपेसिटी जानिछो पीपीसी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कोन पिले जानिछो यूएस रे मने करो गोटे कॉफी रो दाम $1 एठी इंडिया रे गोटे कॉफी रो दाम 10 रुपीज होना नहीं $1 सपोज एक 85 मन कर 85 रुपीज अच्छी अज्यूम कर तेणु अमेरिका रे गोटे लोक गोटे कॉफी पिया को 85 रुपीज कंजप्शन कर दउछि पेमेंट करूछि इंडिया रे 10 टंका पेमेंट होछि होना नहीं तेणु इंडिया रे जेतले 8.5 टा कॉफी पी देबो 85 रे केते 85 टंका रे तेणु परचेजिंग पावर कैपेसिटी कहार अधिक है इंडिया रे अधिक ना यूएस रे अधिक ऑब्वियसली इंडिया रे अधिक सी कोन कहला लिमिटेड परचेजिंग पावर एमंग द लार्जर मासेस तेणु आंसर हे जिवो 2 3 4 होना नहीं यही कारण पे कि कांस्टेंट पे आंसर हे जिवो सी 2 3 एंड 4 ओके ना 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 देख इंडिया रे लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कथा बुझ समस्त मुंड रे वेराइटी ऑफ आइडिया अछि होना नहीं वेराइटी ऑफ आइडिया अछि किंतु समस्त पॉकेट रे सेविंग्स नहीं को इन्वेस्ट करबा पे कि सेविंग्स नहीं समस्त पाखे टेक्नोलोजी बा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक पाखे पहुंची पार बुझी पारुछ ना आउ जदि बा किसी प्रोड्यूस करू सपोज मो गाँव रे गोटे सूता कल किसी गोटे कपड़ा कल कली गाँव में मन कर कथा बुझा चेष्टा कर परचेजिंग पावर लोक पाखे लार्जर मासेस पाखे रहिबो कि रहिबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा tourism industry in India was quite small. Tourism of India was quite small compared to other countries in terms of India's potential and size. Which one of the following statements is correct regarding in this regard? Is correct in this regard? Distance in India too far apart luxury hotels too expensive of Western Ghats. हाँ रे हाँ लोग बुझी क्वेश्चन पे ध्यान दे आगे distance in India too far apart its luxury hotels are too expensive for western tourists for most of the months of India too hot for western tourists feel comfortable most of the pictures resort India such as the northeast of Kashmir for all practical purpose out of bounds in India infrastructure required to attract tourism in each inadequate tourism is quite small on any tourism industry quite small को कारण पे अछि आंसर सुनो इंडिया रे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट इन इनएडुकेट कथा सुनो एबे किंतु ए जिंस को जेहेतु सोशल मीडिया आसी गलानी तुम्हें माने आजिकली सोशल मीडिया में भी तुम किसी प्लेटफॉर्म रे देखुथिबो देखो ओडिसा रे एटा ए जगह रे ए आसीबो एटा बाहर कंट्री नु हे एटा ओडिसा रे जगह ए सब जिंस होना नहीं आजिकली का सिचुएशन देखिबा को गले एटार आंसर एक्चुअली हबो डी किंतु आजिकली का डेट रे कोन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आसी गलानी को टूरिस्ट को अट्रैक्टिव करबा पई होना नहीं ड्यू टू द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना नहीं तो आंसर हे जिवो डी होना नहीं ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ इंडिया तरफ भूल जिनस कि जस्ट फॉर तुम जो कथा कहूँ सिक्योरिटी ऑफ पालग्राम होना नहीं जो कथा तुम कहूँ टेररिस्ट अटैक जो कथा तुम कहूँ दैट इज नॉट द प्रॉब्लम माने इंडिया तरफ से मिस्टेक नुहे बाहर कंट्री पाकिस्तान आसी अटैक करुच्ची दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान
कथा बुझिया चेष्टा कर से जदि गोटे मनुष्य तमें तुम बाटर चलुच आउ गोटे मनुष्य आसी तुमको जबरदस्त हैरान कर इंडिया भूल कौन लैक ऑफ इंडिया लैक कौन किसी ना नेक्स्ट क्वेश्चन in context of independent India economy, which one is the following was the earliest event to take place? Nationalization of insurance company, nationalization of State Bank of India, enactment of banking regulation act, introduction to first 5-year plan. आ भितरे कोटा प्रथम हेतला क्वेश्चन पछला एटा कहितले गोटे गोटे क्वेश्चन सब तक सॉल्यूशन करी लास्ट लेखा पॉइंट देबे तुम देखो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी 1956 रे एलआईसी नेशनलाइजेशन हेतला आ 1972 रे अदर नेशनल कोन इंश्योरेंस कंपनी होना नहीं प्राइवेटाइजेशन हेतला नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केबे हेतला रे 19 जुलाई 1 1955 मसिया रे होना नहीं enactment of act केबे हेतला 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केबे आसला 1949 इंट्रोडक्शन केबे हेतला 1951 रे फर्स्ट 5 ईयर प्लान केबे हेतला तेणु ए क्वेश्चन जदी आंसर हमें देखिबा सबुटो प्रथमे किए हेतला कुह enactment of banking regulation act होना नहीं कोन कहूची क्वेश्चन बुझी पारिलो ना बुझी पारलो होना नहीं 1949 ओके नेक्स्ट which one of the following has बीके चतुर्वेदी कमिटी डील्ड बीके चतुर्वेदी कमिटी कहा सहित डील करितला कहा सहित डील करित रिव्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिव्यू ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट टैक्स रिफॉर्म एंड मेजर्स ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर मने रखो एजेंसी मिसलेनियस रे तमान को पई आसीबो कोथरा आसीबो मिसलेनियस रे आसीबो बीके चतुर्वेदी कमिटी सब बेले प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सेक्टर पई हितला राइट कहा पे हितला प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सेक्टर कहा पे को कमिटी हितला बीके चतुर्वेदी कमिटी मने रख आंसर सी नुहे आंसर हिजबो डी ओके आंसर हिजबो डी प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सेक्टर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which one is the following brings out the publication called energy statistics from time to time होना नहीं सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स कौन जानी तुम एनर्जी स्टैटिस्टिक्स कोल ऑयल गैस ए सब जिनस केते अमाउंट रो प्रोडक्शन हबो केते अमाउंट रो यूजेस हबो केते अमाउंट रो बाहर को आपको कहा जाए कौन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ये कि तमर के सॉरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए दे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए दे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन माने आंसर इज व्हाट माने आंसर इज वो डी नुहे ए बे न आंसर इज व्हाट डी नेक्स्ट क्वेश्चन among the following which one of the following was proposed for Deepak Parekh committee कौन पे हेतला होना नहीं Deepak Parekh committee कौन पे हेतला the study of the current socio-economic condition of certain minority community to suggest measures of financial development of infrastructure to frame a policy on the production of genetically modified organisms to suggest measure to the reduce the physical deficit in the union budget कौन पे होता है इसका आंसर कौन होगा देखो पर एक कमिटी
सबु बेले कोन करतला कोन पई तयारी हला फाइनेंशियल फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करबा पई की को कमिटी आसीतला दीपक परेख कमिटी रे कोन आसीतला दीपक परेख कमिटी आसी बुझिलो आंसर हे जिवो बी ए आंसर सॉरी बी बी sustainable development is described as the development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet the needs of prospective. Inherently, the concept of sustainable development is intertwined with which of the following concept? कथा कौन कहूँ बुझ ये concept है sustainable development concept कार concept sustainable development of the concept हम फ्यूचर पई कि कोन कोन से सब जिनस पे हम जिनसर सठिक यूज करी कि ताको कोन करबा हम फ्यूचर पई कि तो माने फ्यूचर जो जनरेशन आसीबे तांको पई कि कोन करबा बहुत किछि जिनस रखिबा एटा को कांसेप्ट को नै कि होतला ताको कहजे कैरिंग कैपेसिटी आंसर हे जिवो डी कैरिंग कैपेसिटी कोन हे जिवो कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग okay answer is what D carrying capacity. Next question, in which of the भूल करी दो छुआ तो माने को कष्ट लागु छी मु बुझु छी very easy. In which of the following financial year and the devaluation of rupee in India took place देखो को थरे को वर्ष रे फाइनेंशियल ईयर रे devaluation of rupee in India took place twice माने दी थरर इंडिया रो रुपी को डिवैल्यूएशन कराइतला मोस्ट मजेदार क्वेश्चन को वर्ष हितला की कहियो माने नहीं को वर्ष इंडिया रो वैल्यूएशन दी थर हितला कालिया कहूची सी ओके दुर्गा कहूची 91 रु 92 दुर्गा कहूची 91 रु 92 ओके नेक्स्ट आंसर हैला 1991 नु 92 माने नहीं बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सॉरी एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस क्षमा करिवो जो फाइनेंशियल क्राइसिस होतला हबा को जाउथला से समय रे दी थर कोन हेतला इंडिया रो वैल्यू रुपी को कोन हेतला डिवैल्यूएशन हेतला नेक्स्ट क्वेश्चन RBI has cleared the resolution to start payment bank in India. Question आसेला payment bank रो होना नहीं in India for the improving financial inclusion. Following committee had recommended the creation of the payments bank. होना नहीं कहा द्वारा माने किए होना नहीं माने को कमिटी द्वारा पेमेंट बैंक आसित कौन होगा आंसर 26 दुर्गा कोची जीवन ही कष्ट हैलानी अरे बाबू देख ताले सहज कर जीवन को मने रखो नचिकेत मोर कमिटी द्वारा कहा द्वारा नचिकेत मोर कमिटी द्वारा कोन आसला पेमेंट बैंक आसीतला एबे रिसेंट गाइडलाइन अनुसार गोटे पेमेंट बैंक रे मैक्सिमम 2 लाख रुपीस गोटे पर्सन होना नहीं पर पर्सन तमे रखि पारि होना नहीं जिनके तुम आसीगला पेटीएम पेमेंट बैंक फोन पे पेमेंट बैंक ये सब जिनस जहाँ तुम आसीगला होना नहीं पेमेंट बैंक कार नचिकेत मोर होना नहीं सिंपल कथा जदि जीवन कष्ट ताको सहज कर नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडियन इकोनॉमिक्स रैंक इन द वर्ल्ड इंडिया रो रैंक पीपीपी रे केते नंबर अछि थर्ड फोर्थ सिक्स्थ ए दुखी आत्मा बसुची दुर्गा मुझे खुशी आउ नहीं जीवन रे तो की अपेक्षा कर आज तो आसीनी से जो छोटी खुशी छोटी आसीनी नते तो से क्लास रे आसी था नहीं पीपीपी मॉडल ले इंडिया रो रैंक कालिया 4 नुहे इंडिया रो रैंक हला 3 नहीं इंडिया रो रैंक कोन थर्ड आंसर हला 4 ठीक अछि पीपीपी मॉडल ले
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कोटा करेक्टली मैच करी ना, कोई परा कमिटी बैंकिंग सर्विस इंप्रूवमेंट, संयुक्तपा कमिटी रेलवे फेयर, कौन हम आंसर को कमिटी मैच करी ना, गोटे गोटे क्वेश्चन देखो, गोपीपुरिया कमिटी बैंकिंग सर्विस इंप्रूवमेंट पे की हेची है ना नहीं, नंजुपदा कमिटी रेलवे फेयर्स पे हेची, रंगरंजन कमिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हेची, बट रेखी कमिटी सिंप्लिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे हेई नाही। ताले छुआ मते को रेखी कमिटी केबे आसीतला 1991 आसीतला, केबे आसीतला 1991 आसीतला रेखी कमिटी, राइट, गोटे की इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म पे आसीतला, का पे की इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म पे आसीतला, कोन नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म पे आसीतला, का पे आसीतला रेखी कमिटी इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म पे की आसीतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग्स ऑफ इकोनॉमी, on a high savings जतिका लोक कोन करछन हाई सेविंग्स, capital formation may not result significant increase in output due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio। एका किछि समय पूर्व क्वेश्चन मो सॉल्यूशन करथले, किछि समय पूर्व मु तुमको ए क्वेश्चन न सॉल्यूशन करथिले, को कोन हबा आंसर, जस्ट किछि समय पूर्व ताकू किछि अलग लैंग्वेज रे से क्वेश्चन पछरे, दुर्गा कहि देलानी डी, ओके तो पूछी डी, अरे पूछे डी, ओके, बिकॉज ऑफ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, होना नहीं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ओके गुड एक्सीलेंट, आंसर इज वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया run 100% on solar energy, solar energy को 100% इंप्लीमेंट करबा पई की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी के कोन हबा आंसर, चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, आंसर हबो दीव ना नहीं, ये दीव जे के 100% सोलर एनर्जी को यूज करू, ना नहीं केबे से कोचे छात्र आंसर कोन ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट what percent of total geographical area of the country is under forest cover, 2017 रिपोर्ट को पछाड़ी केते फॉरेस्ट कवर हेते, ए स्टूडियो रे नहीं तो हो 2017 मसीहा अनुसार केते फॉरेस्ट कवरेज हेतला, एग्जैक्टली ये दुर्गा बाप रे आंसर समस्त कह दिलो, 2017 अनुसार केते 21.54 फॉरेस्ट कवरेज थला। अच्छा मते रिसेंट के बेतला, रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बेस थला 2023 रे आसीथला, राइट, जानि थबो रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बेस थला 2023 रे। क्वेश्चन हला देखो फॉरेस्ट कवरेज अछि 21.76 फॉरेस्ट, एटा म कोची 2023 रो रिपोर्ट कथा कोची होना नहीं, तापर 3.14% कोन हेतला 14% हेतला ट्री कवरेज, एथला फॉरेस्ट, एथला टी कवरेज 2023 रो रिपोर्ट कथा कोची होना नहीं, और टोटल ट्री कवरेज कते हेला 25.1 25.1 एक टोटल ट्री कवरेज केते, टोटल टी कवरेज एटाला रिसेंट 2023 रो फॉरेस्ट रिपोर्ट अनुसार होना नहीं, इतनी की परसेंटेज करना डायरेक्ट न्यूमेरिकल नब नहीं।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन if a commodity is provided if a commodity is provided free to the public by the government then the opportunity cost is zero, the opportunity cost is ignored, the opportunity cost is transferred from the consumers to the product to the tax paying public, the opportunity cost of the transfer from the consumers of the product to the government public कौन पब्लिक गवर्नमेंट को किसी गोटे जिनस पब्लिक गवर्नमेंट कौन कर पब्लिक को किसी गोटे जिनस फ्री रे दउछि देन कौन हम देन कौन हम जदि मना नहीं फ्री रे जदि दउछि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन करिवो जो माने सब टैक्स पेइंग पब्लिक अछंती मना नहीं टैक्स पेइंग पब्लिक अछंती तांको ऊपर बियर हिचबो मना नहीं जे टैक्स पेमेंट करूचंती तांको ऊपर बियर हिचबो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा को पळेबो कहा ऊपर पळेबो टैक्स पेइंग पब्लिक को पळेबो कहा पे पळेबो टैक्स पेइंग पब्लिक को पळेबो मना नहीं कोन कथा बुझी परिलो ना बुझी पल्लनी आंसर हिचबो सी आंसर हिचबो सी ड्रीम स्टार सत्य हेलो बापा को एरिया रे तुम सब स्टार होछ हो तमरो जो आसीबो कोन संजीवनी बैच जो आसीबो सेतरे ज्योग्राफी पढाइबा ज्योग्राफी रे तुम स्टार आसीबो तुमको टिके ठिया करिके पढाइबा टिके मजा लागिबो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आज पर NSU 70th round situation assessment survey of agricultural households consider the following statements. Rajasthan has the highest percentage share of agriculture households among its rural households. Manani okay. Out of the total agricultural households in country, a little over 60% belong to OPC. In Kerala, a little over 60% of agricultural households reported to have received maximum income sources other than agricultural activities. हाँ हाँ क्वेश्चन टिके बड़ आसुची मधुस्मिता पढ़िबा को चेष्टा कर एते कोडिया हेले हबन होला नहीं इमेजिन करो टिके बड़ क्वेश्चन पढ़िया को तुमको केते कष्ट होची काली जदि चाकरी बाकरी न करिबो सासु घर को जीव बासन फासन माजिबो से काम टिके बाबो केते कष्ट हो कथा कोन कोची बुझ जते बेले 70 सिचुएशनल असेसमेंट आस्थिला एनएसएसओ होना नहीं एनएसएस रो रिसेंट राउंड कॉन्फ्रेंस के बेहितला से केते तम जानिछो 2019 रे रिसेंट अछि 77 अछि 2019 से पचारिला 2000 कोन 70th राउंड रे पचारिला आंसर हिजबो आंसर एक हबो राजस्थान हैज हाईएस्ट परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स among its rural households होना नहीं ताप रहला इन केरल in little over 6% of agriculture households reported have received maximum income from the source of other than agriculture activities पढ़ेबे होना नहीं आंसर हिजबो only 1 and 3 okay next question consider the following statement जदि जॉब निज हिसाब रे करिवो ताल टिके क्वेश्चन टिको टिके पढिबा को पडिबो माने नहीं हमार सेटा 70th पचारि दुर्गा सेटा 70th पचारि 77 the quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years okay the government does not impose any custom duty on all imported edible oils as specified as a special case कौन हबा आंसर
सी बोथ 1 and 2 ड्रीम स्टार सत्य कहउछन्ती सी एठी कहउछन्ती सी कोन आंसर देखो the quantity of imported edible oils बुझी करछो रॉ ମାନେ ନାଇଁ कोन रॉ ऑयल ठीक अछि रॉ ऑयल कोन होची जाति की कोन कराउची इंपोर्टेड कराउची सी कोन हैला एबे जो प्रोडक्शन कराउची एडिबल ऑयल्स ता चाहिँ अधिका कोन नाଇଁ इंपोर्टेड ता अधिका देन प्रोडक्शन ठीक अछि सेकंड स्टेज ता कोन कले एटा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट डज नॉट इंपोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज स्पेशल केस एडिबल ऑयल ऊपर कोन कस्टम ड्यूटी पडुनी कस्टम ड्यूटी पडुची बोली आज तो पेट्रोल प्राइस एते टंका हला कोन नाଇଁ डज नॉट इंपोज एनी कस्टम ड्यूटी नहीं भाई कस्टम ड्यूटी डज नॉट नो डज इंपोज एनी कोन एनी नो डज इंपोज मेनी कस्टम ड्यूटी कथा कोन कहली बुझी पारिलो ना बुझी पाले तो आंसर हे जिवो ओनली वन ओके आंसर हे जिवो ओनली वन ए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट एबे देखो कार टाणो के काको कार टाणो टैक्सेशन अच्छा कथा कोन हैला स्पेशलाइजेशन कौन कौन देखो लिस्ट 1 लिस्ट इज सिलेक्टेड कर यूजिंग द कोड्स गिवन द लिस्ट माने नहीं कौन हबो कुह टैक्सेशन की आनिथिले जानिछो टैक्सेशन पार्थ सारसी सोम माने नहीं टैक्सेशन की आनिथिले पार्थ सारथी सोम माने नहीं नेक्स्ट एग्रीकल्चर की आनिथिले कुह एग्रीकल्चर ऊपर की माने जो पॉलिसी जो आस्थिला एग्रीकल्चर ऊपर की आनिथिले कुह अशोक गुलाटी की आनिथिले अशोक गुलाटी आनिथिले की आनिथिले अशोक गुलाटी मॉनिटरी पॉलिसी ऊपर की आनिथिले कुह मॉनिटरी पॉलिसी ऊपर आनिथिले सी रंगराजन आनिथिले की आनिथिले सी रंगराजन आनिथिले माने नहीं इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टेट प्लेटफॉर्म पे की आनिथिले अरविंद पांजारिया माने नहीं काली पढितली काली नहीं प्रीवियस क्लास रे कहितली माने नहीं फिस्कल पॉलिसी ऊपर की आनिथिले एन गोवर्धन राव माने नहीं आंसर हे जिवो कोन 4 2 3 1 आंसर हे जिवो ठीक तमन को देखाउ छी रे आंसर हे जिवो सी ओके कहलिबा गोटे गोटे क्वेश्चन 5टा 6टा क्वेश्चन आसीबो देखो आउटरे टिके नजर पकई दियो नेक्स्ट को जिबा के जूम आउट कर दियो YouTube रे सेटा हे परिबो सॉरी जूम इन कर दियो आउट हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन assertion an important policy instrument of economic liberalization is reduction in import duties on capital goods माने नहीं an important policy instrument of economic liberalization is reduction in import duties on the capital goods okay regime कौन करला reduction in import duties would help the local entrepreneurs to improve technology to face the global markets माने कौन हबो in context of the above two statement which one is the follow both A and R are the true and R is the correct explanation of A माने नहीं both A and R true but R is not correct explanation of A is true but R is false D हला A is false but R is true कौन हबो ड्रीमस्टर को C ड्रीमस्टर को C देखो an important policy instrument of economic liberalization reduction of import duties on capital goods कथा कोन कोछि जदी जो जिनिस घरे घरे तयारी करा हबो माने नै ताकू बाहरु आ इंपोर्ट करबा को पड़िबो कि जस्ट फॉर गोटे एग्जांपल किछ सम पूर्व कहथले चाइना रु आ कोन टॉयज मैन्युफैक्चर को इंपोर्ट करबा को पड़िबो कि जदि घर घर लोक कौन करेंगे इंपोर्ट करने को घर घर लोक जदि छुआंकर खेलना जदि तैयारी करेंगे ठीक अच्छी ना नहीं गुड इवनिंग आटा लाइन माने नहीं
जदि घर घर लोक कौन करेंगे खेलना छोट छुआ खेलना या चाइना रू इंपोर्ट करने को पड़ो ना ठीक अच्छे रिजन कौन कहला रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज would help the local entrepreneur to improve technology to face the global market जदि इंपोर्ट ड्यूटीज को जदि कम कराबो हुए तो किसी टेक्नोलॉजी को कौन करा जाय परिबो अना जाय परिबो इंडिया मार्केट को जो टेक्नोलॉजी को यूज करी कि कौन करिवो लोकल एंटरप्रेन्योर कौन करिवे तांकर टॉय को मैन्युफैक्चर करि परिबे तेणु बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कौन कौन अच्छी देखिबा दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडस्ट्रियल सिकनेस टैक्स रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर होना नहीं ये कौन करथिले देखो देखो दिस इन्वेस्टमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर के देथिले सी रंगराजन देथिले के देथिले सी रंगराजन देथिले इंडस्ट्रियल सिकनेस को के देथिले ओमकार गोस्वामी देथिले के देथिले ओमकार गोस्वामी होना नहीं के देथिले ओमकार गोस्वामी होना नहीं तो टैक्स रिफॉर्म पे की आनीथिले राजा चले होना नहीं राजा हा चले होना नहीं कि आनीथिले राजा चला रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर करथिले आर एन पल्लव होना नहीं कौन आसीबो 4 2 3 1 सॉरी 4 2 1 3 आंसर हे जिवो बी ठीक अछि आंसर हे जिवो बी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखि जाओ टिके तापरे अच्छा मैच द फॉलोइंग दत्त कमिटी 1969 वांचू कमिटी 1971 राजमन्नार कमिटी 1971 चक्रवर्ती कमिटी 1985 होना नहीं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग डायरेक्ट टैक्सेस सेंटर स्टेट रिलेशन मॉनिटरी सिस्टम कथा कौन कहूँ बुझ दत्त कमिटी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पाई की आसीथला वांचू कमिटी डायरेक्ट टैक्सेस पाई की भी आसीथला राइट राजमन्नार कमिटी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ऐसे को सब को सीधा रह जाइए चक्रवर्ती कमिटी मॉनिटरी सिस्टम पे आसीथला होना नहीं आंसर हे जिवो कोन ए 1 2 3 लगी आंसर हे जिवो ए राइट आपरे नेक्स्ट क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैज बीन ऑपरेशन इन फेब्रुअरी 2005 मार्च 2005 मई 2007 एप्रिल 2007 कोन स्किल डेवलपमेंट जोटा कि एमपे पई बहुत परिमाण रे काम होछ क्वेश्चन आसबार टिके पॉसिबिलिटी अछि टिके पॉसिबिलिटी अछि बहुत कम केबे हितला स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कोन आंसर आंसर हबो मे 2007 सी आंसर इज स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव केबे हितला मे 2007 होना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो जते बेले मो पढे मते भारी अच्छा लागे स्टार्टेड इन इंडिया 1950 1951 1952 1955 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कौन होगा आंसर तुम्हें दिया मधुस्मिता 39 आंसर सी सिभिल में सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कौन होगा आंसर मन रखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 रे मन नहीं यार बहुत गुडे हिस्ट्री अछि आंसर हम 1952 रे कौन दुर्गा 1952 मसिया रे ओके तो ये थिला आज रो क्लास जहां तुम मन को कहितले गुटे गुटे क्वेश्चन ने 5टा 6टा लेखा क्वेश्चन मु तुमको दे ठीक अछि तो कथा लाया आ कौन के कौन कहूछ प्राइम मिसलेनियस क्वेश्चन ये सब दिन थिला
40 मने पड़ुनी मु काली पढ़ी मने पकेदेली बा हौ ठीक अछि आज पई एतिकी बाकी प्रेम आगामी अध्याय रे ठीक अछि हैव ए गुड नाइट थैंक यू ऑल